and welcome back to the symposium. We are at the second and the last session of this symposium. Shri Bhagesh Bhai Jha ji will chair this session, and there will be two presentations. First by Professor Bhawan ji and another by Professor Dhananjay Singh ji. The chair of the session, Shri Bhagesh Bhai Jha ji, did his graduation in Sanskrit and an LLB from Gujarat University. He was an IAS officer. His published works include 3 collections of poems and 4 collections of essays. In Gujarat, among the awards and honors he received are Rabindra Paritoshik for enriching Gujarati literature and Sanskrit Seva Vrati Award from Rashtriya Sanskrit Sansthan. Quite like our session held before this, we have yet another polyglot with us. Let us welcome Bhagesh Bhai Jha ji, and I request him to open the session. Good afternoon to everyone. I think our task is very difficult. The post-lunch sessions are very difficult. I will request everybody that you will ensure that it doesn't become very boring, because subject is so engaging. And today's, as we have seen in the morning, हमने जो सुना, मैं भी खिचड़ी करूँगा, I am from Gujarat. I would like to add some खिचड़ी, हिंदी, गुजराती, यदि भवान् इच्छति तर्हि संस्कृते अपि प्रवचनं शक्यमस्ति. कारणं संस्कृतमपि संस्कृते एव अस्माकं भारतीयसाहित्यस्य महासागरः विद्यते. तेन कारणेन अपि संस्कृते किञ्चित् वदनीयम् इति अहं चिन्तयामि. किन्तु लौकिकव्यवहारं हृदयं धृत्वा अहं हिन्दी एवं आङ्ग्लभाषायाः मिश्रणं कृत्वा गुजराती, being Gujarati, I will try kind of khichdi. The point today is the Indianness in Indian literature. पहले तो, because we are in a very different world. When Mahabharata was written, or when, as in the morning, Honorable Kapil ji said, Krishna Puran में ऐसा लिखा है, and all that. But we are living in a very different age, where we are, every evening we are seeing what is happening in Gaza State. We are seeing what is happening in any corner of the world. And it's a very different society. And a creative mind, for him it is very difficult to confine और एक जगह की बात करना, एक जगह की संस्कृति को इसमें प्रतिबिंबित करना डिफिकल्ट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मुझे तो बहुत आदर्श है कि हम संस्कृत में ही सब कुछ लिखना चाहिए, संस्कृत में बोलना. संस्कृतम जनभाषा भवेत् इति अस्माकं कार्यक्रमः अपि, किन्तु शक्यं नास्ति. कारणं ग्लोबलाइजेशन अभवत् और बहुत लोग गुजरात के अमेरिका में है. एंड मैं अभी गत सप्ताह अमेरिका से आया. वहाँ डायस्पोरा लिटरेरी एकेडमी का एनुअल अधिवेशन था, इसमें मेरा भाषण था. तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जाकर भी क्या होता है और यहाँ भी क्या होता है. तो एक तो इंडियननेस को क्या, व्हाट डू वी मीन बाय इंडियननेस? इंडियननेस मीन्स क्या करना है. जैसे कि सुबह में कपिल जी ने बताया कि भाई हमारी जो मॉरल वैल्यूज है, तो मॉरल वैल्यूज आज के इंडिया का क्या है. मैं तो अगर संस्कृत की कॉन्फ्रेंस होती तो मैं बहुत सिंपल सा बोल देता कि वेस्टर्न है तो वहाँ शुद्ध लाभ है, यहाँ शुभ और लाभ.
प्योर जो कपूर साहब ने सुबह में बताया कि एकदम दूसरों के लिए जीने का, क्योंकि यहाँ 10,000 साल से हम यज्ञ कर रहे हैं, तेने तकते ने भूंजना बोल रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। बट फॉर ए मॉडर्न मैन इन 2023 to think about only Indian is slightly difficult, but it is not very difficult. I will tell you another dimension. Francis Fukuyama, the great thinker, has written one book, Identity. 9/11 के बाद में, if you see, entire world literature is also there is a paradigm shift, and more identity-oriented literature is created, and that's why Trump is telling that let's make, or Biden will speak, let's make America great again, or Sunak and British will say we will exit Brexit, और हमारे मोदी साहब बोल रहे आत्मनिर्भर, सब लोग आइडेंटिटी के लिए रेनेसॉन्स, एक डिफरेंट प्रकार का रेनेसॉन्स हो रहा है पूरे विश्व में। तो इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य का रचना भी होता है, और इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक एट द इंडियननेस व्हिच वी वांट टू प्रोटेक्ट और रिवाइव। तो क्या है ये सब? तो आई वेंट टू यूसी बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एक प्रोफेसर गोल्डमैन है, और प्रोफेसर गोल्डमैन हैज रिटन 8 volumes on Valmiki Rama. I met him and he raised a very good issue. He said that Indians are great because all Indian languages have protected and revived the epics. Rest of the countries have forgotten their epics, or their epics have very little say. Whereas in our lives, if you see, we have a drama, we have some katha or some kirtan, something is going on. So our epics are really live, I can say live stream. We have, आप तो जानते हो राणा साहब कि ये all dramas, there are so many. I myself am writing on Gandhari, and all people are writing something out here or there on Ramayana or Mahabharata. So that is how we are protecting, very slightly unaware, और ऐसे करके भी हम हमारे ज्ञान तंतुओं में रही भारतीयता का हम संरक्षण अनजानपन में भी कर रहे हैं और जान के भी कर रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग दैट इन ए एटमॉस्फेयर ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ था, अभी डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो डी ग्लोबलाइजेशन में जो कोर वैल्यू है वो आइडेंटिटी का, एंड आइडेंटिटी लिटरेचर is also equally important, and that's why the two epics and many things like Bhagavatam and Quran and many things are very very relevant. तो ये तो हम contemporary वर्ड की बात है। दूसरा एक एपिक के बारे में, एपिक के पुराकल्पन को आधार मान के जब साहित्य की रचना की जाती है, तब एक दूसरा भी प्रॉब्लम आता है कि हाउ फार यू कैन टेक पोएटिक लिबर्टी। युधिष्ठिर का नाम लेके आप कुछ ऐसी गड़बड़ वाली कोई नवलकथा नहीं लिख सकते, या अर्जुन को आप क्या बना सकते हो, द्रौपदी का आप क्या कर सकते हो, या गंधारी के इस नाम को लेके जब आप यूज कर रहे हो इंडियननेस एस्टैब्लिश करने के लिए, या यू आर वेरी लॉयल टू इंडियननेस, then it also brings a lot of responsibility that you have to see the core ideas and core values of that great character. जैसे कि साहब ने सुबह बताया 3E वाला, तो मेरे पास 5E का फॉर्मूला है कि महाभारत का जो जैसे युगांत लिखा हीरामती कर्वे जी ने, तो आप देखो कि आज के विश्व में 5 समस्याएं हैं: एथिक्स, एनर्जी, एक्सेलेंस,
education, environment. These are the 5 V's. So ethics is Yudhishthira, energy is Bhima, excellence is Arjun, education is Sahdev, and environment is Nakul. तो ये कहीं ना कहीं आप ये कैरेक्टर्स के द्वारा कुछ न कुछ इंडियननेस एस्टैब्लिश करने में यू कैन सक्सीड. आई एम डूइंग लॉट ऑफ भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ मैं मॉडर्न मैनेजमेंट के संदर्भ में. तो आई ऑलवेज से दैट इन भगवद गीता देयर इज लॉट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. people will say that no ये तो अध्यात्म का बुक है, आप कैसे कर सकते हो. लेकिन lot of people are doing it. And I was very successful in US also. I went to Silicon Valley and gave a lot of lectures on Bhagavad Gita and management, but it is not our subject. But my point is what we are calling new knowledge and new literature, that has to be reinvented and re-read. हम जिसको पुनर्पाठ कहते हैं, हम पुनर्पाठ कर रहे हैं. नरसिंह मेहता का अभी मैं जिक्र करूंगा. नरसिंह मेहता के एक पुनर्पाठ होगा. नरसिंह मेहता ने क्या कहा. तो आज जब रेनेसा और पुनर्जागरण का युग है, तो नरसिंह मेहता के एक ही भजन में जे पीड़ पराई वैष्णव वदन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने, इसमें ही पूरी गीता है. विषाद योग से शुरू होता है, पीड़ पराई जाने, एंड देन यू गो एंड सो स्थित प्रज्ञा के लक्षण जो है सब इसमें आते हैं. तो ये कपूर साहब ने लोगों ने अच्छा बताया था कि भक्ति मूवमेंट में जो इंडियननेस का रक्षा हुआ, that has to be preserved and that has to be enlarged or at least explained to the new generation. Because new generation का प्रॉब्लम है कि they are in hurry and they don't want to, they have no exposure. जैसे कि हमारी पीढ़ी में हमको दो एजुकेशन मिले. We are also got education of English, संस्कृत एंड ग्राम परिवेश में भी. तो ये सब मिक्सचर हुआ था. लेकिन अभी की जो पीढ़ी आई है उनके पास ये सब समझने का टाइम नहीं है. तो पुनर्पाठ करके उनको इंटरेस्टिंग बना के, आई विल ऑल्सो एंडोर्स दैट टेलीविजन हैज रियली हेल्प्ड अस. बट दृश्य श्राव्य माध्यमों के आने से एक बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है कि शिष्ट साहित्य पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं. Isaac Singer, the current, I can say, philosopher and a columnist in Los Angeles Times, he raised one issue in one of his essays. Is that who needs literature? इस युग में लिटरेचर क्यों होना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप अगर B.R. चोपड़ा के महाभारत देखते हो और द्रौपदी को जैसे दुशासन ले आता है, ये दृश्य आपको बताने में उनको 3 मिनट लगता है. Whereas if you go to महाभारत, there are 103 श्लोक्स and वो पढ़ने में इतना दिक्कत होगा. लेकिन पारिमिता जी will agree that when literature is there, it helps your cognitive capacity को थोड़ा तेज करता है. क्योंकि you are making picture in your mind. सा उत्थिता रक्त चक्षुषा क्रोधवती सा, द्रौपदी का वर्णन आता है. तो ये इतना आपको मालूम भी होता है कि इंडियन लिटरेचर में कितना पेंटिंग करने का ताकत है. सो दैट विल हेल्प यू. लाइक हारुकी मुराकामी टेल्स के भी इन्हें दृश्य श्राव्य विश्व में भी आप माइंड मैपिंग करोगे तो योर स्टोरीज विल स्टिल बी रेड. तो ये अगर करना है तो दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. Instead of telling only story, if we go, because mind में क्या चलता है, that will be reflecting your value system, and if that value system is Indian value system, then it will become Indianness in your Indian literature. Last and very important, साहब ने बोला कि there is a big oral tradition, and वर्षा बहन जानते हैं हमारे सौराष्ट्र में बहुत बड़ी oral tradition. गरबा है, देखो गरबा का, लेकिन गरबा को लिटरेचर में कितना स्थान है. आई एम एज ए एकेडमी का चेयरमैन हूँ मैं, गुजरात साहित्य एकेडमी. बट मुझे कोई गरबा की बुक लाके आए कि ये पब्लिश करो तो आई विल ऑल्सो थिंक ट्वाइस. इसमें पोइट्री है, इसमें ये है, नहीं है, सब प्रकार के प्रश्न उठे. लेकिन गरबा
I think more than 20,000 papers are there. Avinash Bhai himself, Avinash Vyas has written more than 50,000. तो ये सब इतना folk literature है जिसमें it is full of Indianness. It has lot of value system. उनको कैसे कैसे अखंड ब्रह्मांड निभाव्या पढ़वे पंडित माँ, ऐसे हम जो गाते हैं नवरात्र में, तो अखंड का दर्शन करो. अखंड में ये माता जी ने अखंड बनाया है, आप खंडित मत करो उनको. फ्रेगमेंटेड व्यू नहीं रखो जीवन का और जगत का, विश्व वर्ल्ड व्यू जो आपने बोला, ये मेरा भी वर्ल्ड व्यू है, तो मेरा वर्ल्ड व्यू अखंड होना चाहिए. दैट अखंड एक्चुअली ही इज सिंगिंग द ईशोपनिषद. तो ये सब इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फोक साहित्य में भी इतना बड़ा ताकत है. चारण साहित्य है. हमारे सौराष्ट्र की जो कथा कहने की शैली है, कथा कथन, इसका एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है. तो जैसे ICH यहाँ संगीत नाटक अकादमी में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हम बात कर रहे हैं, तो एवरी लैंग्वेज हैज अ बिग ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन. तो उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन करना तो ये संभव ही नहीं है. आप ट्रांसलेशन कर नहीं सकते क्योंकि वो तो गेय है, इट इज सिंगिंग. इफ सौराष्ट्र में इफ यू गो, इट इज अ रैप म्यूजिक. समय सामने समय जय सूर्य दिन में नर नाम के पायसन गरंग रमे, you can't translate it into English, so or Hindi even. So every language has that greatness. And जो साहब ने बताया कि हमारी विविधता में एकता है. The contrast is offering harmony, and that is the real Indianness. भाषाओं का उपयोग तोड़ने के लिए तो बहुत किया, लेकिन अब जोड़ने के लिए करना चाहिए. और अगर हम ये करते हैं तो आज की जो चर्चा है, that will give us some takeaway which will be very very useful. And I believe that new generation of literature, and particularly this technology and the easy translations are available. Of course it's very dangerous. Google Translate will do some इतना बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, but at least primarily we can take some clues. But कुछ ना कुछ बड़ा translation का मिशन लेके we should at least get all Indian languages together. तो जो आश्चर्य कपूर साहब ने रखा था कि जो लोग मिले नहीं हैं, राजस्थान में एक प्रक्रिया चल रही है और सौराष्ट्र में कोई गीत फोक संगीत में है, ऐसा ही गीत तमिलनाडु में भी मिलता है, ऐसा ही गीत उड़िया में भी मिलता है. तो क्या है ये सब जिससे हम जुड़े हुए हैं? अगर इस भाषाओं में से इंडियननेस की व्यापक चर्चा हो जाए, उसके उदाहरण सहित चर्चा हो जाए, तो हम जो एकता, आज तो सरदार पटेल वल्लभ भाई को आप याद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नेशन है, इट इज ए पोस्ट बिस्मार्क कंसेप्ट. बट आप देखो तो सरदार जी ने जो काम किया हमारे पटेल साहब ने, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग काइंड ऑफ थिंग विच नाउ द लिटरेचर should also do, because when we are meeting and we are asking so many words. I think with this positive note, we have a very distinguished two speakers, so I will request them. Thank you. With the permission of the chair, let us first invite Professor Rabindra, who is an eminent Hindi poet and an expert in social history and cultural anthropology. As a sociologist, he identified the fundamental political understanding and constructs of North India. His important poetry collections include Tumdi Ke Shabd, which won him the Sahitya Akademi Award, Khudai Mein Hinsa, Shabd Padiyam, and Sach Sune Kai Din Hue. He is honored with prestigious awards such as Bharat Bhushan Agrawal Award, Kedar Samman, Spandan Kriti Samman, Rashtrakuvi Dinkar Award, Shamsher Samman, Meera Smriti Samman, and, as I said, the Sahitya Akademi Award. His poems have been translated in several Indian languages, and his columns, based on political analysis,
are published bilingually in leading magazines. Many books based on his ideological essays have been published. Welcome, Professor Rabindra. Thank you. I'm very thankful to Sahitya for inviting me for this celebration, for this seminar. And I'm really very glad and very happy to be part of the very distinguished panel led by Sri Nagesh Shaji and Mr. Sahitya Singh ji. So I think this session really, and also the kind of audience which are here, Mr. Sahitya, Jainji, Bhawan, so many तो आज इसकी शुरुआत ही की है. तो दो बातों से मैं शुरू करता हूँ अपनी बात. एक तो भागेश जी ने अभी जो कहा कि सरदार जी ने एक जो भारत बनाया, हम साहित्यकारों को भी एक भारत बनाना चाहिए. और उस भारत की जो भारतीयता है, भारतीय साहित्य की भारतीयता इस विषय हुई है. तो वो भारतीयता क्या है? भारतीय साहित्य से कैसे? और मुझे लगता है कि भारतीयता एक मूल्य के रूप में जो आदरणीय जी ने उसकी चर्चा की, भागेश जी ने चर्चा की, जी ने उसको आगे बढ़ाई. मैं थोड़ा उसके जो लिटरेरी जो, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी भारत इज नॉट मेयरली अ स्पेस. एक स्पेस भी है और साथ साथ एक नैरेटिव भी है. कोई भी स्पेस दो तरह से बनता है. एक तो ज्योग्राफी से बनता है और एक नैरेटिव से बनता है. बिना नैरेटिव के you can't imagine the meaning of this space. And there is a very interesting geographer, cultural geographer, her name is Doreen Massey, and she very rightly suggests that a space, the meaning बिना narrative के हो ही नहीं सकती. And narrative are not mono narrative, some multiple narrative. Suppose that if you want to imagine our Ayodhya, you have to imagine our, and if you have to imagine our, you have to imagine Manas and so many other traditions of narrative. तो narrative जो साहित्य का जो काम है वो ये है कि एक तो जो कोई भी देश जो भारत बनता है वो नाटी, मेमोरी, माटी, स्मृति और मूल्य, इन तीन से कोई देश बनता है, कोई स्पेस बनता है. और ये तीनों माटी नॉट इन फिजिकल वे बट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, ये नैरेटिव के थ्रू ही डिसेमिनेट होता है. जैसे एक वेरी इंटरेस्टिंग जो मीडिया माइग्रेशन हुआ था 150 years ago from Bhojpuri region to Mauritius region. There is एक सचिन है मुंशी रमान खान, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है और वो एकमात्र कैरेबियन माइग्रेशन को समझने की एकमात्र बायोग्राफी है. उसमें वो कहते हैं कि जो यहाँ से जब जाती थी कलकत्ते से जहाज, तो वहाँ चारों तरफ पारंपरिकों के लोग हजारों लोग इकट्ठे हो जाते और वो क्या मांगते थे? तीन चीजें मांगते थे. वो कलकत्ता से ऑर्डर किए होते थे कि हमारे लिए आना चाहिए. एक माटी, भारत का माटी है तो कपड़े की माटी. दूसरा नैनसूट कपड़ा, एक नैनसूट कपड़ा बनता था कलकत्ता में जिससे. और तीसरा ये जो लोक गाने की जो ढोलक होती है, ये तीन चीज के लिए वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं. तो आप समझ सकते हैं इसमें माटी भी है, मेमोरी भी है और नैरेटिव भी है. तो इसके थ्रू ही स्पेस बनता है. तो भारत अब नैरेटिव में कौन सा भारत है? तो एक भारत जो स्पेस है और एक भारत जो नैरेटिव है. नैरेटिव मूलतः सर्वेटर बताएंगे आप सब कि मूल्यों का डिसेमिनेशन का एक माध्यम है. भारत में नैरेटिव सिर्फ गल्प नहीं है, गल्प के थ्रू एक मीनिंग है. उसका मीनिंग है इससे मूल्य आप प्रोवाइड करते हैं. आप किसी भी नैरेटिव को देखिए, किसी भी छोटी कहानी, लोक कथा, बड़ी कहानी, epic, किसी को भी देख लीजिए, you can find certain messages that in that, and through that narrative or story वो मैसेज डिसेमिनेट करता है. तो मेमोरी के डिसेमिनेशन का एक माध्यम है नैरेटिव. और वो फिर और वो ओरल, जैसा कि सर ने कहा थी, ओरल मोस्टली ओरल है. और फिर तब वो ओरल में बदलता है, उसके साथ ओरल जुड़ता है, फिर विजुअल जुड़ता है,
फिर रिचुअल जुड़ता है, रिचुअल उसका एक माध्यम है। यानी अगर आप देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, रिचुअल एंड नैरेटिव होता है। यानी हमारे यहाँ जितनी व्रत कथाएं हैं वो व्रत के साथ जुड़ी हुई हैं। जितने रामायण महाभारत के ट्रेडिशंस हैं, कथाएं हैं, उनका कोई कोई रिचुअल के साथ जुड़ाव है। जब रिचुअल है तो उसके साथ विजुअल है, यानी आपको एक देवता बनाना पड़ेगा, या तो रामलीला आपको खेलना पड़ेगा, तो राम का कोई रोल करेगा, रावण का कोई रोल करेगा। तो दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, यानी नैरेटिव, विजुअल, ऑरल एंड ओरल, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। विजुअल आज जो पूरा हमारे नई नैरेटिव खड़ी हो रही है, जो आइकॉन्स आ रहे हैं, इन आइकॉन्स का स्टैचूज हम बना रहे हैं, उनके स्टोरीज इवॉल्व कर रहे हैं, और उसके तो मेरा कहना है कि एक स्पेस इवॉल्व्स थ्रू नैरेटिव। विदाउट नैरेटिव देयर इज नो मीनिंग ऑफ द स्पेस। सो इंडिया विदाउट नैरेटिव देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। तो अब वो जो नैरेटिव है वो क्या है, देयर आर मल्टीपल लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ नैरेटिव, मल्टीपल, इट्स वेरी मल्टीपल, इतनी तरह की हमारे यहाँ नैरेटिव है, इतनी तरह के ट्रेडिशंस हैं, लेकिन वो जैसा कि भाग्यश्री ने कहा, वो खंड नहीं है, वो अखंड है। कैसे अखंड है? नैरेटिव स्ट्रक्चर हमारे यहाँ के नैरेटिव का किसी भी नैरेटिव को ले लीजिए, हम तो दलित ओरल ट्रेडिशंस पे हमारा काम है ज़्यादातर, और अगर आप देखेंगे तो जितने भी दलित आइकॉन्स हैं जिनके नैरेटिव है, चाहे दीना बद्री जो मुसलमानों के नायक थे, या जो दालदेव पासी, मालदेव पासी, बिजली पासी, सो मेनी दलित आइकॉन्स, एंड माला उदल, एंड जो लोरिक सैलेश कहानियाँ हैं। तो किसी भी स्टोरी को अगर आप सुनिएगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स रिपीट, उसमें कोई ये सारे हीरोज आते हैं, कहीं ना कहीं आएंगे, 2 मिनट के लिए आएंगे, 3 मिनट के लिए आएंगे, 4 मिनट के लिए, कोई ना कोई संबंधित का है। इट्स अ कॉस्मोलॉजी ऑफ द आइकॉन्स, इट्स अ काइंड ऑफ एक वेरी वेल, पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज है, नो वन नोज, इतना ऑर्गेनाइज्ड ये नैरेटिव स्ट्रक्चर है, सबने मिलकर तो बनाया नहीं होगा, एक बैठ करके नैरेटिव बनाया, ये तो इवॉल्व हुआ होगा बिकॉज़ इट इवॉल्व थ्रू परफॉर्मेंसेस एंड मोस्टली थ्रू पशु मेला। पशु मेला में जब पशु मेला होते थे तो महीनों भर लोग वहाँ पे बैठ करके और रहते थे, और उसमें फिर वो नाटक, कहानी, कथा सब बनते थे, गाए रखे जाते थे। तो आई डोंट नो हाउ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च, किस तरह से एक तरह का एक अखंड जो नैरेटिव पैदा हुआ, इसमें representation of all each and every identity of each and every community you can find there, and they have their own voice and they have their own culture है। Respect this ये जो नायक हैं, they fight with each other, तो ये सब 12वीं 13वीं शताब्दी के नायक हैं, they are warrior, they fight with each other, but हर की कथा के अंत में आता है कि एक respect, लड़ाई के बाद की लड़ाई with respect, with dignity, with norms, with values। तो वैल्यूज एंड नॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ट्रेडिशंस के नए फॉर्मेशन में। अब वो क्या है, त्याग, तपस्या, संतोष, ढेर सारे मूल्य जो हम अपने गाँव में सुनते रहते थे बचपन में। मुझे लगता है अगर आप बहुत गहरा रिसर्च भी कर लें, शिकागो में भी रिसर्च कर लें और बर्कले भी कर लें, तभी आपको दिखाई वही पड़ेगा, यही सारे मूल्य हैं जो इन सारे ट्रेडिशंस में रिकर कर रहे हैं। ये डिफरेंस इट्स नॉट डायरेक्टेड डिफरेंस, किसी ने कहा हो कि आप कर लीजिए, बट वी हैव आवर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैरेटिव। हमारे संत हैं, हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट जैसा कि सर ने कहा, पंथ हैं, सेक्स हैं, प्रवचन हैं, ये सारे के थ्रू हमारे यहाँ का नैरेटिव ट्रेडिशंस बनता है, और लोग सुनते हैं किसी भाषण, किसी संत का भाषण सुना, वो भाषण किसी को की मेमोरी में गई तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट अपने उसमें रचा, फिर एक नैरेटिव खड़ा हुआ। जैसे एक हम अपने गांव आए बिहार है, तो मैं अपने गांव से आ रहा था, चल के हमें बस स्टेशन आना होता है वीकली, पहले तो अब तो सड़कें बन गई हैं, प्रधानमंत्री जो रोड्स हैं, पहले तो खेत के बीच से आ रहा होता था। तो मैं खेत से आ रहा था तो एक दलित खेत कोड़ रहा था और एक गीत गा रहे थे, वो खेत कोड़ रहे थे और गीत गा रहे थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स, यानी गीत गाना और काम करना, श्रम। और गीत क्या गा रहे थे, का कोई राई पाई पाई जोड़ी के, एक दिन उड़जन है सुगनवा इगरा के छोड़। तो ये जो राई पाई पाई जोड़ के क्या होगा,
So now we should re-evaluate ourselves. LIC, GIC, those are investment. So this country, this entire hope, which global hope is we this modern people are trying to disseminate in the society. This Dalit person, लगता है वो साथ में रोटी खा ले, लगता है वो नहीं खा पाता होगा, लेकिन इतना संतोष है और संतोषी नहीं, उस संतोष में कॉन्फिडेंस है उसको। हाँ, वो क्यों कॉन्फिडेंस है? कि कहाँ से आता है? ऊपर से, मोदी जी तो कहते नहीं है, कोई नेता तो कहता नहीं है उनको, इंदिरा जी तो कहीं कहते नहीं गई। वो कहता कौन है? वो कहता है कबीर का सॉन्ग ट्रेडिशन, वो कबीर को सुनता है, कबीर को गाता है, हरिदास को सुनता है, हरिदास को गाता है, सत्यनारायण को सुनता है, सत्यनारायण को गाता है। तो वो उनके उसमें दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ always we try to project Indian society as a caste society, very conflictual society. ये है कि नहीं कहता हूँ कि नहीं है, but my mother who is a Brahmin lady, वो एक गीत गा रही थी सुबह में, कहती थी ग्रैंडल सॉन्ग जत्सार का, और वो जो वेस्टर्न पैथेटिक सॉन्ग ट्रेडिशंस which we have in our area, जत्सार इसमें औरतें अपना दुख गाती हैं, अपना कष्ट हुआ उनको, कैसे कैसे उनको सांस ले सिखाया, ओम सिखाया, क्या क्या हुआ उनका। तो वो एक शिवनारायण जो दलित संत थे उनकी बनाई हुई गीत थी जो गाती थी। वो मुझे बाद में पता चला जब मैं रिसर्च करते रहा, वो गाती थी तो मुझे लगा कोई ब्राह्मण लेडी है, कुछ वेद पुरानी गीत गाती होगी, बट जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, then I traced the song, the journey of that song, and that song came to our habitat through शिवनारायण। शिवनारायण वो दलित, तो दलित और गैर दलित का ये जो भेद है जो हम लोग प्राय बनाते थे, वो मुझे लगता है कि नैरेटिव ट्रेडिशंस में, नैरेटिव वर्ल्ड में वो उस तरह का कॉन्वर्सेशन नहीं है। नैरेटिव वर्ल्ड बहुत ही समाहारी, समरस, एक दूसरे को जोड़ने वाला। नैरेटिव कहानी तभी हो सकता है जब वो जोड़े। इवन कॉन्टेस्टिंग एंड वॉइंग नैरेटिव which न्यू बुद्धिज्म और which दलित पॉलिटिक्स इज ट्राइंग टू जनरेट, उसमें भी आप देखेंगे कि एक समय के बाद आप सेकेंड जनरेशन और सेकेंड स्टेज ऑफ नैरेटिव कंस्ट्रक्शन में आपको लगेगा कि दे आल्सो वांट नेगोशिएशन और एडजस्टमेंट। जो एक हमने काम किया था निम्नवर्गीय समाज की स्थिति और संस्कृति का है, उसमें हमारा कहना था कि जो इससे दिखता है दलित नैरेटिव में वो फॉर एक्सेप्टेंस, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो तो डिसेंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अंततः हर विजिट in Indian society, like India, wants a kind of adjustment, negotiations, क्योंकि ये सब भारतीय समाज लड़ते रहने वाला समाज नहीं है, इस वेरी एडजस्टिंग समाज में दूसरे को तो वो चाहते हैं अंततः उसका वो हो जाए। अब मुझे लगता है कि मैं करीब 20 मिनट बोल चुका हूँ, 5-10 मिनट और बोलूँगा, फिर मैं आ जाऊँ। अब ये जो इंडिया है, भारत है, तो भी कह रहे हैं इसको, अभी तो मुझे याद बात है कि मैं इलाहाबाद को इलाहाबाद ही कहता हूँ, कहना कुछ नहीं होता है। तो जो ये भारत है, ये बहुत अलग अलग तरह से यूनाइटेड होता है। ये जैसे मैं हमारे मित्र हैं जो अगेन नीचे माइग्रेंट और नीदरलैंड बहुत बड़े वो पूंजीपति कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारे लिए भारत हम इतना प्यार करते हैं, लेकिन भारत लौट के जाना संभव नहीं, क्योंकि जाएंगे तो हम गांव में रह नहीं पाएंगे, वहाँ मच्छर काटेगा, वहाँ पे पानी की समस्या होगी, वहाँ पे जीवी रखना रहता है और वो मक्खी रखते रहते हैं, खाते हैं लोग, फिर भी कुछ नहीं होता लोगों को, लेकिन हमें बीमार पड़ जाएंगे तो अब हम रह नहीं सकते साथ। लेकिन भारत को हम अपने आइलैंड, कौन सा आइलैंड नाम लिया जाती है, उस आइलैंड पे रह के मुकेश का गीत सुनते हुए और जो हम भारत का एहसास करते हैं वही भारत हमारा है। तो और अपने पुरखों को याद करते हुए, अपने पुरखों को याद करते हुए मुकेश का गीत सुनते हुए आइलैंड में इमेजिन, तो मेरे लिए भारत को है। तो भारत देखिए वहाँ एक नैरेटिव के फॉर्म में उस आदमी के साथ, स्मृति के फॉर्म में, स्पेस के फॉर्म में नहीं है। अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का भारत है, वो भारत वो नहीं है जो हम प्लान करते हैं। अब वो the person told me that there is another person who is also a very Indian politician of the past,
he said he's a poet also, Rabindra, his brother was a very eminent Suriname poet. तो he told कि अभी हम गए थे बिहार से, बिहार से मुस्लिम गए थे सर बिहार, कहते क्या बोलते हैं, कहते अभी हम बिहार गए थे इस साल और खूब बोली बना के आए। मैंने कहाँ गए बिहार में इस बार, कहाँ बॉम्बे गए थे, उसके लिए बिहार बॉम्बे एक लेडी मेरी वहाँ पे एक मछली की दुकान की थी सुरीनाम में, बोला इस बार हम बिहार गए थे और 15 गाय खरीद के बांट आए गाँव में। हमने कहा कहाँ गए, कहा कि पौंडीचेरी गए थे। तो फॉर देम बिहार, इंडिया इज भारत इज बिहार एंड बिहार इज एवरीवेयर। सो भारत इज बिहार एंड बिहार इज एवरीवेयर। तो हर कुछ बिहार है। तो they have their own symbolic connection with India, with the भारत, और वो symbolic connections को इस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ कि लास्ट में छोटी सी कहानी आपको सुना के बात अपनी खत्म करूँगा, और that story tells you that how every story or every narrative work as a vehicle of values in the society, and that makes it India is a land of values, चाहे वो वैल्यू ज्ञान का हो, चाहे वो वैल्यू योग का हो, चाहे वो वैल्यू स्वाद। ये इसका कहते हुए ये नहीं कहूँगा स्वाद नहीं है इंडिया, ये कहते हुए ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे हिंसा नहीं है, ये सब कुछ है। लेकिन नैरेटिव ट्रेडिशंस हमेशा एक आइडियल को रिप्रेजेंट करता है, और वो रियल उस आइडियल को काटता रहता है, बट वो आइडियल उस रियल को रिशेप करता रहता है। सो आइडियल एंड रियल के बीच का रिफ्लेक्शन भी होता है और आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी होता है। So we used to go to do field work with the witnesses for our research, and we request the ladies and the old ladies and old people to narrate the story. You know, that's one of the mode of doing research. My methodology, we call बात से बात methodology. तो हम कहते हैं आप एक किताब लिखी तो बीच छापी, उसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने विस्तार से methodology किया है, कैसे है, क्या है। तो एक लेडी से हमने कहा कहानी सुनाइए, वो पहले तो लेडीज कहानी सुनाती नहीं, ठीक है, रात में आई कहानी, दिन में नहीं सुना जाता है, कहानी सुनाने का भी समय है। दूसरा वो मैं मेल हूँ तो मुझसे नहीं सुनाना चाहिए, तो कमिटमेंट में हमारे साथ लड़की थी, उसको tried to persuade her to get a story. So she told a story. Many stories we have collected from the chat. एक गाँव है इलाहाबाद के पास जहाँ वो बहुत बड़ा है। तो वो स्टोरी क्या है, एक राजा था बड़ा गरीब था, एक राजा था बड़ा गरीब था। ये भारत में ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एक राजा था बड़ा गरीब था, उसकी एक पत्नी थी, रानी थी। रानी रोज पानी भरने जाती थी। अब रानी पानी भरने जाती, रानी रोज पानी भरने जाती थी। रानी इतनी कोमल कमनीय, मतलब वो ये भाषा साहित्यिक है, उसकी भाषा में जो अवधि में जो कहानी सुना है कि वो इतनी पतली थी कि जब वो पानी भरने जाती थी तो तालाब में कमल के पत्ते पर पाँव रखकर पानी भरने, एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक चल के नीचे पहुंच जाती थी और वहां से पानी भरती थी। एक दिन उसने देखा कि शहर की औरतें आई, नगर की औरतें, नगर शब्द है उसमें। तो उसने कहा कि वो सारी गहने पहने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगता है गहने। तो वो बड़ा मतलब उसको थोड़ा मन में हुआ कि मैं भी ऐसे गहने पहने। तो आई और उसने आके घड़ा फेंक दिया, कहा मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। पति ने बोला क्या हुआ भाई, क्या क्यों नाराज हो? बोला नहीं, रानी ने बोला नहीं, लेकिन इतना दिन हो गए, एक कहना तो नहीं कर पाया मेरे लिए। और देखो नगर से औरतें आई थी, सेठों की औरतें इतना गहना पहन के आई थी, हमें भी गहना बनवाओ। राजा ने कहा कि हमारे पास तो चंदा, हम टैक्स तो लगाते नहीं है। अब ये देखिए जैसे टैक्स तो हम लगाते नहीं है जनता, तो हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो गहना कहाँ से लगा? तो नहीं, अब जाके टैक्स लगाओ, टैक्स लगा के पैसा उगाओ, पैसा उगा के मेरे लिए गहना। राजा ने कहा कि ठीक है, खाना नहीं मिलेगा, तो राजा ने टैक्स लगाया, पैसा उगा, गहना बनवाया, गहना बनाया। रानी गहना बन के तालाब में पानी भर गई, पानी भरने गई, जैसे पत्ते पर पाँव रखा और वो पूरे कपड़े उससे भीग गए। वो लौटी, फिर घड़ा फेंक दी। तो बोला क्या बात है भाई, अभी तो तुमको कहना मैंने इतना अच्छा करवा के दिया। कहा नहीं, अब ऐसा करो, ये गहने लो,
बेचो, पैसे से जो आए उससे सभी जिससे टैक्स किया है उसको लगाओ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो ये जो मैं ऐसे ही खुश हूँ, that is the Indian tradition of narrative which reframes our space, and that space is different from the space of the Western mode of dividing the space. और मुझे लगता है मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ और I now invite our next speaker, Professor Dhananjay Singh, who is a noted writer, poet and critic. He is the author of the monographs Fables in the Indian Narrative Tradition, an analytical study, and The Poetics of Theatre in Early India, and the forthcoming, perhaps it must have not yet, forthcoming state, Philosophy of Performance in India. He worked as assistant editor in the prestigious project titled The Encyclopedia of Indian Poetics with Professor Kapil Kapoorji as the chief editor, a project of Sahitya Akademi. Several of his research papers on language, literature and other areas of cultural studies have been published by esteemed publications such as Sahitya Akademi, Palgrave Macmillan, Springer Nature and Indian Institute of Advanced Study, Shimla. He was awarded Research Secondment by the European Union's Marie Curie International Research Exchange Scheme to the project Social Performance, Cultural Trauma and Re-establishing Solid Sovereignties at Trinity College, Dublin. Professor Dhananjay Singh. Thank you so much. Really grateful to Sahitya Academy for this opportunity, especially the Secretary Case with Nostalgia, and I'm honored to be here with Shaji and some of the unions here. And my guru, Professor Kapil Kapoor, and G, there's some ambiguity. So I work with assistant teacher, chief editor, language, and thank you so much for making this possible. I have, of course, my perspective. ठीक है. So, Indianness of Indian literature पे बात हो रही है और कुछ चीज़ों पे मैं आपकी चाहूँगा. Well, Meenakshi Mukherjee, one of her books, of course, The Persian Empire, which won the Sahitya Academy Award in 2003. There she has a chapter called Anxiety of Indianness. And there she makes a distinction between Indian English writings and literature in Indian languages. और वो हम कहते हैं कि Indianness की जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो Indian English ऑथर्स जो है उनको है, क्योंकि उस समय obviously total of 90s जहाँ तक कि Indian English works थे उसका एक global acceptance था, and the target audience was of course outside India. The literary market which dominated that kind of perception. So you have to justify your presence in a country where primarily Indian languages are dominant as linguistic cultural consciousness of the people. Therefore, you need to find time, you need to work to say that what is Indianness and what is Indianness in Indian literature. So primarily problem को ही बाद में चीजें चर्चा में आई हैं और अभी जैसे कि मैंने भी कहा, it's related to the question of India की बात है और जो साहित्य का जो औचित्य क्या है उसकी बात है, साहित्य और हिस्ट्री का कनेक्शन है, इतिहास की कनेक्शन उसकी बात है. मेरा ये मानना है कि इंडियननेस भारतीयता जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड है, क्योंकि भारतीयता क्या है एक साहित्य में, ये वो साहित्य जो कि एक स्पेस और एक
एक एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीयता के काफ़ी दर्शन है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये लगता है कि जब हम सोचते हैं कि भाई जो भारत का कॉन्शियसनेस क्या है, यूनिटरी कॉन्शियसनेस है, उसको इंडियननेस डिफाइन करता है और साहित्य जो है उसका साक्षात्कार, मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलूँगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। So for me, the question of Indianness is similar to the question of self in the Indian tradition, in our intellectual tradition, and like all of here great scholars of Sanskrit, and because of my guru, I could read certain things of poetry, so I know only a few things that I read in the translation. So जो चर्चा है इंद्र और विरोचन और प्रजापति बीच आती है, चंद्रों के लोग तो जो सेल्फ की कल्पना वहाँ पे है, वो जो चर्चा है कि and its relation to the conscious life, its relation to the psychological life, its relation to deep consciousness. तो सेल्फ क्या है, सेल्फ की अनुभूति क्या है, वहाँ पे फिर कंक्लूजन आता है कि सेल्फ इज नॉट फॉर सेल्फ इज नॉट ड्यू टू फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल experiences, cannot be reduced to it, but self is an indefinable condition for all of these to exist, whether it is a physical life, biological life, psychological life, whatever. Self is a condition, but that cannot be described, that cannot be a part of language, that cannot be represented in language. और ये चीज़ हमारे philosophical tradition में है, बोलते तक भी है philosophical tradition की language और logic के जो contours हैं, चाहे नाम है 36 शताब्दी में। तो इंडियननेस मेरे लिए वो है, इंडियननेस एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट है, इंडियननेस है, क्योंकि इसकी अनुभूति होती है। पर इसकी अनुभूति को हम किस तरह से डिस्क्राइब करें, किस भाषा में डिस्क्राइब करें, वो पॉसिबल नहीं है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। I want to draw your attention to Raja Rao. Raja Rao's 1996 book, The Meaning of India. And I want to quote from Raja Rao's book. And he's talking of India, obviously. और वो कहते हैं कि if there were no India with 7 seas to the south and the white stone Himalaya to the north, if India did not have the holy Ganga and the cave of Virgin Goddess Kanyakumari, if India were not the land of elephant and the monkey world, of the parakeets and peacocks, of the saintly cobra, if India did not have the diamonds of Golconda, the birds of Coromandel, if India were not the land of the sadhus, etc., he goes on. Then he says India is not a country, it's a perspective, it's a darshan. And I want to draw your attention to the concept and theories of Benedict Anderson, which we have quoted so time and again in our own student days, obviously, in our own teaching career. So for what is India? For India is a construction. India came into being much later. India came into being because it was a language and a construct for what is a nation. Now what Raja Rao says is that India is darshan. It is not climate but mood arasa in the play of the absolute. It is not India who makes Indian, but it is not Indian who makes India, but India who makes Indian. And this India is in all. It is at the center of awareness, wherein one's self dips again and again into the hurt of agony and sacrifices. So he talked 3 terms: darshan, rasa, and vini. To me, of course, Indian literature is diverse, but there is an underlying, of course, integration, not only integration, but oneness of consciousness, which can be theoretically, of course, conceptually can be best understood in terms of the rasa theory, in terms of rasa consciousness, the rasa सिद्धांत है, उसकी बात करें, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, चाहे आप शशि थरूर की रिलीज राइट, चाहे उसकी बात करें, चाहे उनकी एक और नॉवल है द ग्रेट इंडियन नॉवल, उसकी बात करें, सबका जो है एक सबकी अनुभूति है, रस की अनुभूति, चाहे वो भक्ति की अनुभूति है, क्रोध की अनुभूति है। तो अगर हम इंडियननेस की बात करते हैं, इंडियन साहित्य में और इंडियन लिटरेचर
पहला सवाल ये आता है कि लिटरेचर क्या है, हमारे लिए लिटरेचर है क्या? क्या हमारे लिए लिटरेचर और हमारे जो है जो टेक्स्ट में एक तरह से चर्चा हुई है। अगर महाकाव्य अलंकार में कहते हैं कि शास्त्र और काव्य जो है वो दोनों इंसेपरेबल है, शास्त्र का जो है नॉलेज जरूरी है। अब शास्त्र का नॉलेज जरूरी है तो सोशल रियलिटीज, पॉलिटिकल रियलिटीज, हिस्टोरिकल रियलिटीज, ऑफ कोर्स देयर नॉलेज एंड कॉन्शियस इज इम्पोर्टेंट। और व्हाट इज लिटरेचर देयर? और literature has a different function altogether. Literature has a different function than political discourses. This is accepted both by writers, authors, thinkers in the domain of literature as well as who are outside the domain of literature. For instance, Kautilya's Arthashastra. Kautilya's Arthashastra, Kautilya begins with all different, of course, disciplines. Right? He begins with the Vedas, the Upanishads, Anvishiki, mentions all text, and then he, of course, goes on to talk about Danda, Niti, those things are very much. It's a different kind of discourse. Abhinavgupta, of course, in his commentary on Arthashastra, obviously, first chapter commentary, the first chapter itself, he says that when Sahitya, अगर रामायण को अगर हम पढ़ते हैं, तो दृश्य काव्य की बात आती है कि रामायण को हम पढ़ते हैं और रामायण को हम देखते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ह्यूमन कॉग्निशन है, और मैं लैंग्वेज नाम को थोड़ी देर बाद, ह्यूमन कॉग्निशन है, प्रतिभा जो है, एक रीडर है वो भी एक अधिकारी है अपने बुक में चलने की, और प्रतिभा एक रीडर में, स्पेक्टेटर में भी है, वो अपने तरीके से चित्रित करता है साहित्य को और उसके अनुभव को। पर वहाँ कहते हैं कि जो ड्रामा जो है, द थिएटर मेक्स एक्सपीरियंस पॉसिबल, साक्षात्कार को पॉसिबल करता है साहित्य जो है। तो साहित्य जो है, साहित्य में ऐसी क्या चीज है, साहित्य में ऐसा क्या तत्व है जो साहित्य को साहित्य बनाता है, लिटरेचर को लिटरेचर बनाता है। और ये डिफरेंट है अदर डिस्कोर्सेस से। और अगर अदर डिस्कोर्सेस का अलग फंक्शन है, लिटरेचर का एक रेस्टोरेटिव फंक्शन, साहित्य का रेस्टोरेटिव फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक कहानी पढ़ूँ और मैं मान करवा दूँ चाहते तो वो साहित्य की objective nahi hai. Well, there could be a political discourse that is provocative. Even when a literature is, let's say, representing an experience which is painful, the sole aim of literature is to restore the social being, is to restore the individual being. And how? Because it uses a different language. It has a certain impact. और वहाँ पर रस की बात आती है, रस को आप किस तरह से समझें, of course, and रस is an experience of this. Rus is an experience, and I'm quoting Professor Kapoor. Rus is an experience that one has in a theatre or a reading text. That kind of experience of this. It's an experience in terms of an impact that a literature has on a human being, on a human person. What is the content of an experience? That is something which is difficult to pin down to material references. Because there is something. Therefore, it is close to philosophy. It is close to yoga, and it is bhakti, positive bhakti. That's what is literature. And therefore, there are, if you look at some of the important attempts, obviously, that have shaped the way Indian literary thinking has gone, is with the language. There is an understanding, obviously, and I was reading Sheldon Pollock, with whom I have some differences, but he does make one statement that obviously when we talk about the literature's connection with history, and pre-modern literature, which is a pre-modern, but rather we like to use the word non-modern, because we are not in a chronological linear time. And there are aspects of Indian society that is touched by modernism, but they're non-modern in our own ways. So the idea is this, that Indian thinking of language, or deep thinking of language, is equivalent to a direct reference to history, direct reference to society. And whether we talk about Akademi,
मेन जो इशू लैंग्वेज में जो है, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज में है, वो वहाँ से मैं साहित्य का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरा करूँगा कि when Bhartrihari talks about categories like sport and money, or Mandukya Upanishad translation of this reference that a word has, I think there are two versions, that a Shabda, that Shabda can't be translated as word, but Shabda has 4 parts. 3 parts of the word can be heard, can be uttered. 1 part can neither be heard nor be uttered. दूसरा वर्जन बोलता है कि 1 पार्ट सुन सकते हैं, 3 पार्ट नहीं सुन सकते. But interesting thing is that a part that cannot be heard or that cannot be uttered is the one that constitutes the meaning. Therefore, literature is a distinct discourse, it is a different discourse, different than a political discourse, as we understand in modern terms, historical discourse, because literature makes that gap fulfilled. That there is a gap between language and meaning all the time. We cannot communicate. The very fact that we have performance, the very fact that my hand is moving because I have a consciousness that what I am speaking is not complete, cannot fully articulate my meaning, and therefore my hand moves. And that is a source of, philosophically, that is a source of performance, that is a source of dance, that the whole body becomes part of an act because it needs support. And the way word or sound can be uttered, it cannot completely articulate the meaning. And therefore, we have Adhikavya. Now, whether it is, and that is why when we talk of Indian English writing as well, when we remember, I was talking to Raja Rao's meaning of India, but Raja Rao's Kanthapura, especially forward in the Kanthapura, of course, the seminal text for students of Indian English literature as far as language as a post-colonial discourse becomes important. And then Raja Rao, there of course, and it's quite a famous statement that he makes, and of course Rushdie has his own arguments against it. But obviously, what Raja Rao says is that, well, English is an alien, but not an alien language. And therefore, the problem is this, that one has to communicate the spirit which is Indian into language which is not Indian, right? But what is more important for him is that he says that there is a certain thought movement that you need to communicate. And that thought movement cannot be communicated in the language, which is even so. That is why all Indian English writers have consciously tried to do something with the language. And therefore, I have an unpublished paper going to be published from Routledge. Therefore, I say that Indian English writings always use 2 languages. One language which is English, the other language that it uses the cadences of the Indian language. Even your Vikram Seth, of course, one of his interviews is very famous, The Suitable Boy, he says that the Hindi translation would have been a better novel. It is a conversation through characters from Hindi, it is better. So, Indian English writing, all of them, that 2 languages are working at the same time. The cadences, obviously, are the same. Because there is always an attempt to reach to something, to reach to essence, obviously, which cannot be reduced to any material kind of identification. The question of identity, of course, as you said rightly, is very important for us. There is different kinds of forms of identity, obviously, but all forms of identity to me relates to the question of being. And question of being is related to the question of language. Whether it is Dalit writers, beautiful stories, whether it is your Kensula writing Nagaland, those stories, or Mamandai from Arunachal, Arunachal region from Pensa, Adis had a term called Kiyu. Kiyu is a term, Adi, those Adis, tribes in Arunachal. And it is pretty similar to what we have in Brahma, that consciousness in fact emanates into everything. The point that I'm
I'm trying to say is that identity, yes, certainly, but identity ultimately leading to being. The fact that there is a being and that the recognition for प्रतिविज्ञान थोड़ा मैं उसको खींच के use कर रहा हूँ different context for recognition for being, being could be individual being or social being, community being. That is what is central, important to the way Indians have thought about literature. I want to talk about Rajshekhar. So I want to talk about Rajshekhar, obviously, and in Rajshekhar, of course, Pravritti, the concept that Rajshekhar gives us, an important concept. Normally, when I teach the Natya Shastra, because I will be continue to teach the stage when I'm JNU. So, regional variations of performance, whether it's Shakespeare that gets performed in cinema in India, in Hindi or in Malayalam. Pravritti is a very, very extremely important concept there. There is one concept called vritti. Vritti, one being the vritti of the styles that you have different styles in different parts of the country. The Rajshekhar also mentioned this. But the way vritti, Bharata uses vritti, and correct vritti is pravritti. Bharata uses vritti, and as it is interpreted by Christopher Brisky, who is the leading vritti, is the origin of literature itself. Origin of literature with four aspects, of course. There's the speech as such, speech, body, the ornaments as such, and the fact that how and the origin of literature is to be seen with the origin of the communicative act that every being wants to communicate, whether it's individual or social being. Communication is important. If there is no communication, obviously there is not frustration, there is a common word that one uses, but there is depth, of course, there is no communication. And that is why all suppressed societies also they expect the other to communicate, obviously, to accept this. Now, Jallianwala Bagh happened, and it was pushed to amnesia by Britain. And that's a great harsh act, obviously. Or for instance, 1984 happened. And the fact that its recognition, sufficient recognition is crucial. Therefore, communication, and that's the role of literature. That the heart of literature, literary consciousness, is the communicative act with this originally, should I want to use power, which is pre-linguistic. Which is when a being who is not gifted with language would make an effort to communicate with the body, to communicate with doing something, to communicate using a tool, using an external tool. Now that is what literature makes possible. That is vritti. And then you have pravritti in Rajshekhar, in Bharata. Pravritti, of course, is an inherent potency, inherent ability in a word or in a thing to manifest in meaning, to manifest as meaning, or to incline an agent towards an action, which again can be connected to Martinaic concept. These are the two essential elements that combine vast Indian literature, including oral tradition. I had the opportunity to work with Sir in the project that we ran. Literatures all across the country, obviously. Literatures were not simply written literature, but literature that have a very strong tradition, very strong oral tradition as such. Literature as, in fact, consciousness of people who they are, they know it by the sound that they are. Now, that is what that's what defines, to me, that's what defines Indianness, obviously, of Indian literature. So, thank you so much.
luxury on top. Moreover. So that's what the literature has to live by time. But you said very nicely. वृत्ति बाद में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद में निवृत्ति आएगी। निवृत्ति का भी समय आना है, लेकिन I think particularly ये आपने space and narratives की जो geography की बात की and cultural geographer उसमें जिस तरह से हुआ आज पूरे दिन पर जो चर्चा हुई I will come again to that question that we all write for an audience and that audience has to remain Indian. If India is Indian, then our literature will be Indian. If India is transforming, if our audience is changing, because audience is giving a lot of energy to the author. जैसे स्पीकर को ऑडियंस इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे readers are also influencing the authors. So that's very, very important that the Indianness of Indian literature will be in proportion with the Indianness of Indian people. So if that is achieved, and that is happening all over, because I told that Renaissance in the entire world after 9/11, there is an identity crisis and consciousness about identity is increasing every day. So I think with this positive note that we are all craving and going and trying to bring out the Indian values in our writing. And as आपने राजशेखर को कोट किया, I will quote आनंदवर्धन ऐसे इग्नोर न किंचित अपूर्वम, इसमें कुछ नया नहीं है, आप नया लेके आओ। नया लिखने की खेवना में, नए लिखने की इच्छा में ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल यथार्थ से बहुत दूर निकल जाए। तो ये करेंगे तो आपको इस ऑडियंस विल डाइवर्टिंग। So I think there is a big and good circle which will finally take us to आपने जो बोला उपनिषद में यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, जो ब्रह्म का आराधना है finally, that will lead us to tell a story, tell something, as Salman Rushdie said in Post-Truth Era, his book, the languages of truth. So we are telling fables and fictions to convey truth, because that is how it has to complete the circle. So ये माया भी है और शब्द की जो शब्द तो ब्रह्म है, तो हम सब शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। तो आइए फिर से संकल्प तो करें ही कि इंडिया में, इंडियन लिटरेचर में इंडियननेस जितना ज़्यादा हो सके ना इंडियननेस लाके वी कैन ऑल्सो एक हवी इस महायज्ञ में जहाँ भारतीयता का पुनर्जीवन हो रहा है, वहाँ हम भी अपनी आहुति दें। धन्यवाद। Very, very enlightening to listen to all three of you. And for the sake of repeating, maybe you have talked about our epics, where we draw sources of inspiration as we try to be faithful to that. And currently writing a series on mythological women and bottom in the same suits. And I always try to, in some story I try to describe Ram's jealousy. That's not a very easy topic in India to write about. Anyway, you have spoken it very nicely. Madhuri Narayan has spoken very nicely regarding space and narrative, the connection, and our folk tradition, how where we draw our narratives from. And I'm particularly very enlightened about Dhananjay's saying about safe and cultural space. Those two things are very important in literature. I just want to make a small query. How is Indianness of Indian literature is different from Westernity in Western literature? So, what is Indian literature? We have understood all through the day. I mean, we all have been knowing this. But how do we differentiate? Why do we say that this is Indian and
And what do we say? Yes. No, it's very difficult. As in the beginning I said that literature needs the literature, because in a globalized world you can't say that we will be confined to this kind of narrative only, because all over and now if you write, somebody in Germany will read your fiction, and so we have a vaster and wider audience. Unlike Vyas has an audience, he was knowing that this is my audience. But in a social media and so much wider things are not available. But we are focusing to see and to find out how far evolved literature of 21st century is preserving or protecting or reflecting Indian values. Because Indian values are different. As Kapoor Sahab morning very clearly, he said that we have been always working for somebody else. We are always for भोग and योग. ये योग की भूमि है, जहाँ त्याग करना, किसी के लिए जीना, ये सब we have चार पुरुषार्थ है कि हम किस लिए जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं. We have so many things defined in our ancient literature. So if this can become a leading light, we can chart our path. That is our literature discussion. May I again to Rabindra? Because I know this is English literature, and isn't it that we imitated the existentialism and surrealism that was so prevalent in Western literature for some time? Now we have back to our roots, but in between, maybe the writings of 70s, both Indian poets and novelists and storytellers, they had tried to imitate. Why did we imitate? What is so, were we so enamored by the existentialism or the surrealism that was prevalent in the West at that point of time that we tried to imitate? We did. In the 70s, Odia literature also had found it, many other languages also. And English Indian literature has always been that. Yeah, this is a very interesting question to say, because both Krakauer and especially Krakauer, of course, had some Indian influence. So not only in case of existentialism or surrealism, expressionism, because we are cut off from our roots. But existentialism that causes anxiety is different from the sense of meditation on existence that leads to liberation. So they cut off some indirect influence. So I mean, why are poets and writers speaking? Because of course they all philosophical ideas and texts. They have their what should say their time when they become very, very important. They get very quoted and they come here from the West. Like for instance, all the terms and categories are global now, not global south wo chal raha hai, because it was created in America and so now we are going. I mean, so it's become there has been not only the tendency to stay the time, and not that the poets, of course, but that has been the case, obviously. You are fashionable, it worked. Because borrowing everything from the American Academy, Western humanity is Anglo-American. Anglo had declined after the World War. It was American Academy. And Indian Academy was simply an appendage, a franchisee of the American Academy. वो मेटाफर कहते थे, हम भी मेटाफर कहते थे. वो कोडिंग कहते थे, हम भी कोडिंग कहते थे. उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करनी शुरू करी, हमने भी कर दी. उन्होंने वो क्या था वो डिकंस्ट्रक्शन वाला सारे लोग डिकंस्ट्रक्शन नीचे पड़ गए हैं. दरीदा अच्छा फूको शुरू हुआ, फिलोसफी और नॉलेज सब लगे हुए हैं. किसी को समझ कुछ नहीं. इनफैक्ट द इजीएस्ट रिसर्च इन इंग्लिश डिपार्टमेंट was to research on Western theory, because neither the student understood, nor the advisor, nor the supervisor. कुछ भी नहीं तो सब पास हो जाता है. तो फैशन था और उससे आप वही काम करते हो तो
एक उसका एक इस सब चीज़ की एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आप ये करते हो तो आपको अमेरिका की टिकट मिल जाएगी, वीज़ा मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप ये अपने धर्म के चक्कर में पड़े तो आपकी वर्टिकल मूवमेंट हो सकती है, पर हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। Was it something like some kind of lack of confidence? बिल्कुल, we were totally imitated. अपने whole academy is subordinate. अभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लीजिए, रीडिंग द स्टेट, आपको सारी किताबें अंग्रेजी की मिलेंगी उधर वालों के लिए। इवन इन लिंग्विस्टिक्स अभी भी nobody introduces पाणिनि और पतंजलि और भर्तृहरि, ये तो धनंजय पढ़ाने लग गया तो पढ़ाने लग गया, ये तो कौन पढ़ता है? अब है फिलोसफी का 10 कोर्स है ना, तो 9 तो होंगे वेस्टर्न, और 10वें में आत्मा और सोल का कंपैरिजन का तो बस हो गया इंडियन। तो ये even basic subordinated minds, translated minds, and translators' minds. But I find that transition is happening. Now the change has come. So now the Indian literature has. अब तो आजकल ये उठाओ तो नीचे से डंडा बोलता है इंडियन नॉलेज, आजकल ये फैशन हो गया। अब आजकल तो फैशन है इंडियन नॉलेज हर जगह, और they have introduced an MA in Indian knowledge. I don't understand how you can have an MA in Indian knowledge, because Indian knowledge system जो वैदिक वाङ्मय में कहा है, there are 202 disciplines, 80 निगम, 120 आगम and 64 extraordinary sciences. तो आप MA इंडियन नॉलेज सिस्टम में 202 पढ़ाओगे? हाँ, मुझे पता ही मुझे ये फैशन है। We are fashionable people. There is very little reflection. Our unfortunately education planners, जैसे syllabus makers हैं या something हैं, इनको पता है आप कैसे select होते हैं, कैसे धक्का मुक्की करके वो member होते हैं। तो काम सिर्फ एक होता है किताबें prescribe करो, किताबें prescribe करो तो उसकी जो royalty मिलेगी उससे पैसे आएंगे। ये काम होता है उसमें। हमें स्कूलों कॉलेजों में किताबें लगाओ। Relatively sad situation. Change is coming. I agree with you. Yeah. Because large scale people are involved. From quantity, the quality may emerge. Thank you. That's hopeful notes. सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे आपने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात की, भारतीय साहित्य में जब भारतीयता की बात करते हैं तो ट्रेडिशन है तो हमारे पास संस्कृत की बहुत लंबी परंपरा है, हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी भाषाओं में हुई है, बांग्ला में भी। जो एक रचना है आपने पढ़ी होगी या बहुत सारे लोगों ने, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, क्या उसको भारतीयता के विविध स्वरूप के अंतर्गत रखते हुए प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं? यहाँ से मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में जब आधुनिक साहित्य में आएंगे, परंपरा के क्रम में बढ़ते हुए जब आधुनिक साहित्य में आएंगे तो आधुनिक साहित्य में प्रस्थान बिंदु के तौर पर क्या इसको लिया जा सकता है? इसमें आधुनिकता के भारतीयता के स्वरूप क्या आपको लगता है कि यहाँ से माना जा सकता है? देखिए, जहाँ तक आनंद मठ का सवाल है, वो एक खास परिवेश में लिखी गई नॉवल है, तो अगर उस परिवेश में आप उसको रख कर देखते हैं तो कुछ बातें खुद स्पष्ट हो जाती हैं। भारतीयता का एक एस्पेक्ट है जिसको उठाया गया है उसमें, क्योंकि देखिए जब हम, मेरा कहने का जब मतलब था, मैंने जब भारतीयता की बात की तो मैं ये कह रहा था कि ये ना ही ट्रेडिशन कोई फिक्स्ड कैटेगरी है, ना ही मॉडर्निटी फिक्स्ड कैटेगरी है। हमारी दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इनको किसी भी तरह से या तो एसेंशलाइज कर लेते हैं या इनको फिक्स कर देते हैं। भारतीयता एक तो उसमें समय के साथ, परिवेश के साथ, काल के साथ बदलाव आ रहे हैं, तो उस समय उन्होंने आनंद मठ की जब रचना की और उनको स्वतंत्रता संग्राम के बीच में रखकर देखा तो सन्यासी का वहाँ होना, वो जो बात सुबह कपिल कपूर जी कर रहे थे कि त्याग की भावना को, सो उनका जो मंतव्य था, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि त्याग की भावना जो है एक
सन्यासी में होती है और उसको अगर अपने देश के प्रति वो समर्पित कर सकें, अपनी एनर्जी को चैनल कर सकें, उसी सन्यासी की भावना से प्रेरित होकर देश प्रेम का मोह हम ले सकते हैं और त्याग की भावना सीख सकते हैं और उसको हम चैनल कर सकते हैं देश के लिए। सो एक इनडायरेक्ट उस तरह से तो आता है, लेकिन डायरेक्टली अगर कहेंगे कि उसमें संस्कृति का प्रतिबिंब है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी रचना पूरी संस्कृति को समूह के उसको प्रस्तुत करने की ताकत रखती है। वो देखिए, संस्कृति इतना, इसका इतना विस्तार है, इतनी व्यापक है कि आप उसको किसी भी रचना के बीच में स्थित करके उसके किसी एक परिवेश को, किसी एक मूल्य को उठाकर तो देख सकते हैं, लेकिन उसको एक रचना में समूह नहीं सकते। मैं जरा सभी योर परमिशन, नहीं सर, ट्रेडिशन शब्द जो है उसका अगर हम अंग्रेजी से जरा परे हट जाए ना तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है। परंपरा, परंपरा का परंपरा, परंपरा एक लिंक्ड चेन ऑफ व्हाट, ऑफ टेक्स्ट एंड थिंकर्स। ये है परंपरा, लिंक्ड चेन ऑफ टेक्स्ट एंड थिंकर्स। परंपरा ये मतलब नहीं कि वो दिए जलाता है दिवाली में, हम तो बल्ब जलाते हैं, हम मॉडर्न हो गए, है ना। परंपरा is simply in our, while we use in the context of literature and other things, it is a continuous presence of linked texts. आप from the Vedic reference to Rig Vedic reference to 1200 etymologies, to right up to through Ashtadhyayi, right up to Nagesh Bhatt in Karnataka 1795, continuous chain of thinkers on language, unbroken. West does not have that kind of culture. उनकी किसी सब्जेक्ट में नहीं है ट्रेडिशन। नाउ आई एम यूजिंग ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ परंपरा, उनकी है ही नहीं। उनके यहाँ बड़ी रप्चर कहते हैं, रप्चर। अरे हमारे इंटेलेक्चुअल सोचने लगे रप्चर तो बड़ी अच्छी चीज होगी जो वहाँ होती है, तो कहने लगे हमारे यहाँ भी बड़ी रप्चर है ना, हमारे यहाँ भी बड़ा रप्चर है, क्योंकि वेस्ट में होता है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, पर हमारे यहाँ कोई रप्चर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं हो, कंटिन्यूस ट्रेडिशन, कंटिन्यूस। पहली बात। दूसरा, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, मॉडर्न, मॉडर्न इतना हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है कि लोगों को पता ही नहीं कि मॉडर्न डज नॉट अप्लाई टू इंडिया। मॉडर्न इज एन एपिसोड इन यूरोप्स हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। रेनेसां में there was ontological shift from God to man. पहले वो सारा जो उनका medieval monastery literature है, बड़े अच्छे राइटर, थॉमस ए कैम्पस और सेंट ऑगस्टीन वगैरह, brilliant, but they were all, the subject matter was God, man's relationship to God. This was the subject. But Renaissance में they shifted from God to man. One. Secondly, epistemologically, they shifted from book, Bible as authority to reason and experiment. Bacon का norm और Jenner और Descartes का on method, rationalism and empiricism. ये जो shift है from God to man and from book to reason, इस हिसाब से India has been perpetually traditional and perpetually modern. हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध का ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, he shifted the Hindu mind from ritual to reason. बुद्धिस्ट लॉजिक आज भी पढ़ाया जाता है वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों में, शिफ्टिंग द हिंदू माइंड फ्रॉम रिचुअल टू रीजन। तर्क जो कि रीजन का एक पार्ट है, तर्क भर्तृहरि तर्क के बारे में, तर्क इज ए वेरी डोमिनेंट एपिस्टेमोलॉजी, बट हम वेस्ट से डिफरेंट इसलिए हैं कि हमने तर्क को प्रीडोमिनेंट नहीं बनाया कि भाई ये अल्टीमेट है, कि भाई रीजन अल्टीमेट नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। सो दे ऑफन गो इनटू रॉन्ग कंक्लूजन्स। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि तर्क हर जगह लगता नहीं, कुएं का पानी गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, तर्क लगाओ। डायमंड कोई भी आदमी रीजन से नहीं बता सकता कि ये डायमंड कितना प्योर है या कितना नहीं, कहाँ लगेगा तर्क। सो तर्क एक्सेप्टेड है। हमारे यहाँ आम भाषा में
कोई ज्यादा तर्क करे कहते बड़ा तार्किक है, वैसी है ना, वो कुतर्क करता है ना, कुतर्क करता है। तो इसलिए मॉडर्न डज नॉट अप्लाई टू अस। वी हैव बीन परपेचुअली परंपरा में रहने वाले एंड एक्सट्रीमली मॉडर्न, दैट इज आवर नॉलेज, एंटायर नॉलेज। आपको पता है हिंदू धर्म में गॉड नहीं है विद ए कैपिटल जी, ये बड़ी लोगों को समझ नहीं आती बात। आपके 6 दर्शन जो हैं उनमें 3 में मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक गॉड कैटेगरी नहीं है, गॉड है ही नहीं, हमारा गॉड नहीं है। ये देवी देवता जो है ना, ये काहे के देवी देवता है? भगवान राम जो है उनको सरयू नदी में जाके जल समाधि मिली, भगवान कृष्ण को जानवर की तरह मारा गया ना, तो हमारे तो गॉड नहीं है। और भगवान, परमात्मा, ईश्वर ये सिनोनिमस नहीं है। ये जो कोई एक शक्ति है, पराशक्ति है ना, पराशक्ति जो ब्रह्मांड जो भी है, पराशक्ति का काल शक्ति के अनुरूप किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उसका उपयोग, तो योग में ईश्वर है, पर योग का ईश्वर स्मृतिहीन ईश्वर, उसे याददाश्त ही नहीं है। आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लो कि मेरी टिकट दिला दो, मैं बड़ा जरूरी जाना है, शाम की फ्लाइट की, उसको याद ही नहीं रहना। स्मृतिहीन ईश्वर नास्ति, स्मृति की बात। और दूसरी बात, जगन्नाथ मंदिर, उड़िया लोग बैठे यहाँ, जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान है, 3 भगवान है ना, उनके ना कान है ना हाथ है, वो ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं, उनकी आंखें हैं, they only observe. So you and I are being observed. We have to take care of what we do because हमारा जो कर्म है उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। You cannot get rid of it. This is very, Hindus are very different. Greeks को सफरिंग होती है तो वो कहते हैं fate is responsible. Christians को होती है तो ओरिजिनल sin is responsible. पर हमें जो सफरिंग होती है तो मैं खुद जिम्मेदार, मैंने खुद, I am responsible. You cannot get away from the effect of karma. इसलिए ये मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, ये अंग्रेजी सब छोड़ के बैठो, समझ? Well, today we had simply outstanding presentations, and the last session of interventions and interaction was so brilliant that made the day. परिसंवाद के दौरान तो हमने प्रोफेसर राणा नायर जी ने जो शॉल की बात की थी वो तो ओढ़ ही ली थी, और सेमिनार के अंत में, सेमिनार के पश्चात जिस कमल के पत्तों की बात बद्रीनारायण जी ने की, अगर ये शॉल ओढ़ के हम उस पर पैर रखते भी हैं तो डूबेंगे नहीं। सभी का हार्दिक धन्यवाद। ये परिसंवाद यहाँ समाप्त होता है। सभी चाय के लिए